Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration, MPA403, in today's lecture number 23, and I'm your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram. So before we move on to our today's topic of discussion, let's have a brief reflection of our previous lecture. In our previous lecture, we have talked about different benchmarks, like for example, you must understand the other person before you speak. So this is really very important, and that shows the importance of feedback mechanism for planners and administrators. So the ideal planners and administrators, they give more importance to the feedback, and that is the basic theme in this theme. So when we talk about the best standards of the world, so in our previous lecture, we have talked about those standards. Another very important characteristic the ideal planners and administrators should go for, and that is the concept of synergy. Now, the concept of synergy says that the whole is greater than the sum. Like for example, when we give you the example of 1 plus 1 is equal to 2, now it means that when individual efforts are there, 1 plus 1, it is 2. But when you two persons are working as a team, it is 1 plus 1 is equal to 11. So when people are working in teams and they have harmony, they have coordination, cooperation, so they help each other, they use each other's brain, and they get facilitation from each other. So as a team, they go for better results and better outcome. So let us move on towards our today's topic of discussion, and that is concept and scope of compensation management in planning and administration. Now, what is compensation management? Compensation management is the process of developing, implementing, maintaining, communicating, and evaluating the remuneration in order to get, motivate, and retain the competent employees, according to Stephen P. Robbins. Now, this is one of the most comprehensive definitions of compensation management. So it involves not only development but implementation and maintenance of communication and evaluation. So basically it deals with the remuneration. So when we talk about remuneration, of course, it includes all the financial and non-financial rewards as well. And the basic purpose of compensation management is to motivate employees and is to retain the most competent employees with the organization. So those organizations having poor compensation systems, it is very difficult for those organizations to retain their best employees or to motivate their employees. So motivation and retention of employees, they are directly related to compensation system of any organization. So it is the human resource management function that deals with every type of reward individuals receive in exchange for performing organizational tasks. Now, it could be any reward. It could be appreciation certificate, some moral encouragements, training and development. It could be some financial benefits, more delegation of power and authority, things like that. So it is an exchange relationship. Of course, it is like exchange process. You are providing your services, and in return, you are getting the rewards. So it is a kind of exchange relationship. So what do we mean by exchange relationship? It is like give and take.
You are providing your services, and in return you are getting the rewards. Now, equity theory says that the input-output ratio, the ratio जो है, that should be, equal with the other persons who are working in the same industry or who are in competition. Like for example, any person like who's working in one organization, it is an exchange relationship according to Stephen P. Robbins. Like for example, when a person is working in an organization, he compares his input-output ratio with other persons like working in other companies, like on the same designation, on the same grade. And if he finds any inequity, he goes for correction. So what does it mean? It means that if your input is higher and your output is, whatever you're getting out of it as a reward, if it is less than your input, there is inequity. So your input and output ratio should be in alignment with each other. So in organizations where there is an alignment of input-output ratio, employees are more satisfied and they stay with the organization for a longer period of time as compared to those organizations जहाँ पे employees जो हैं उनकी input-output जो ratio है उसके अंदर एक inequity देखी गई. Now compensation should be equitable. Now what do we mean by equitable? Like for example, every organization, almost every organization in the world, they are in tight competition. So every organization has competitors, and so the major competitors, when we talk about the employees and their compensation, their salaries, their financial and non-financial rewards, they should be equal. Or like for example, if you want to more like motivate your employees, and if you want to retain your employees and you want to provide a better comfort and environment to your employees, so you need to pay more to your employees. So लेकिन on the other side, like for example कि आप जो है like same industry में, equal industry में, same grade के ऊपर अगर highly competitive salaries नहीं होंगी तो employees जो हैं definitely they lose their motivation. So they should be balanced. And then जैसे हमने पहले बात की कि एक balance होना चाहिए कि employee का जो input है और उसका जो definitely जो output है उसके साथ एक balance नजर आना चाहिए compensation को. Cost effective. Again, I will re-emphasize that कि good compensation systems जो हैं they are highly cost effective. कि आप definitely organization ने survive करना है, market में compete करना है, तो जब तक compensation जो है cost effective नहीं होगी, ये ना हो कि आपकी जो cost है वो ज़्यादा आ रही है और आपके जो profits हैं वो decline पे जा रहे हैं, या आपके profits उतने नहीं हैं जितनी आपकी cost है. अगर आपकी cost 100 rupees है और आपका जो profit है that is like 90 rupees, तो फिर आप definitely आप decline side पे जा रहे हैं. तो compensation should be cost effective and secure. Definitely एक protection होनी चाहिए employees को कि they should feel secured and they should feel protected. कि एक like for example कि there should be 100% certainty कि at the end of the month employees are going to get the compensation and they will be rewarded. Incentive providing. So the best compensation systems, they provide the best possible incentives to their employees, and of course the result is increased motivation and better performance. Acceptable to the employee. Now the compensation should be acceptable to the employee. Now उसमें आप क्या करते हैं कि for example when you do the hiring of employee during recruitment and selection process, during interview or during test, you may ask the employee, the job applicant, that what his or her expectations are from your organization in terms of compensation. तो जो आपकी compensation है, जो आपके rewards हैं, financial and non-financial rewards, those should be acceptable to the employee.
So these findings are from the philosopher Patton. Now, according to Stephen P. Robbins, compensation management has different types, and one type is called the financial compensation. It means that direct like wages, salaries, bonuses and commissions. तो जब आप बात करते हैं wages की, salaries की, bonuses की, commissions की, so it is something you are getting directly and indirectly, like for example vacations, insurance, child care services. So these are the indirect financial benefits. According to Stephen P. Robbins, this is the type of financial compensation. So the other type of compensation is called non-financial. Now, non-financial means that it enhances dignity and satisfaction from work. So it is the responsibility of the, of course, administration that they need to do, they need to take those measures that enhances the dignity and satisfaction from work. और एम्प्लॉइज के लिए एक environment क्रिएट करें जहाँ पे उनकी ईगो हर्ट ना हो, जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट दी जाए, जहाँ पे वो एक बहुत ऑनर फील करें, और दे शुड बी फील सेटिस्फाइड फ्रॉम वर्क. कंस्ट्रक्टिव सोशल रिलेशनशिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव जो रिलेशनशिप्स हैं विद कॉलीग्स, विद जूनियर्स, विद सीनियर्स, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. Or employee-employer relationship is also very important. So that is also called non-financial reward. और जितनी ज़्यादा ये relationship strong होंगी, research has proved that कि उतना ही ज़्यादा employee motivated होगा, उतना ही ज़्यादा employee loyal होगा. और definitely जब employee जो है वो loyal होगा तो उसकी जो performance है वो enhance करेगी, और उसकी जो एक रिटेंशन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स एम्प्लॉइज जो हैं, जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की, सो समटाइम व्हाट हैपेंस दैट कि एम्प्लॉय जो है वो काम करना चाहता है, ही और शी वांट्स टू गिव द बेस्ट एफर्ट्स, पुट इन करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि उनको एम्प्लॉइज़ को सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, उनको सफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेट करे, ताकि लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पुअर परफॉर्मेंस के इश्यूज ना आए. ऑफर सपोर्टिव लीडरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट मस्ट बी देयर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जितनी ज़्यादा आपकी सपोर्ट होगी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉय ज़्यादा अपनी एक ऑनर फील करेगा और उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड होगा. एंड इट एनहांस फिजियोलॉजिकल हेल्थ and intellectual growth as well. So according to Stephen P. Robbins, both of these rewards, financial and non-financial rewards, are important, but in the long run, Stephen P. Robbins is of the view that in the long run, non-financial rewards are more important than financial rewards. So this is a very important finding. So people who give more importance to salaries, people who give more importance to their bonuses and commissions and things like that, so according to research, these things are at number 2. The first most important thing is your non-financial reward. And here I would like to add one more thing, that training and development. Like organizations जो अपने employees को learning opportunities, growth opportunities दे रही हैं, providing them training opportunities. So as it is also a kind of non-financial reward. तो employees जो हैं, they feel of course more satisfied, because organization के अंदर जब learning होगी, एक growth opportunities होंगी, उनको मालूम होगा कि जी I can develop my skills, I can improve my skills, I can polish my skills. So this gives them a lot of inner satisfaction, and of course inner satisfaction move towards of course better performance and creativity. So talking about the purposes of compensation,
for effective compensation, these are the purposes. The first thing is ensure equity. Very important कि जब हम बात करते हैं कंपनसेशन की, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक इक्विटी होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को आप एक डिफरेंट सैलरी दे रहे हैं और सिमिलर ग्रेड में एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉइज को एक डिफरेंट सैलरी दे रहे हैं. तो यू शुड इंश्योर equity, equitable treatment, equal treatment होनी चाहिए एम्प्लॉइज के साथ. So if there are any differences or deviations, तो definitely that has a negative impact on employees. तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप उसको पे फॉर परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर सकते हैं, जैसे हम आगे भी बात करेंगे. तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को तो क्राइटेरिया बनाया जा सकता है, लेकिन उसको लाइक फॉर एग्जांपल सिमिलर ग्रेड्स में सिमिलर डेजिग्नेशंस पे अगर आप उसको इक्विटी नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट, ऑफ कोर्स आपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसमें एफिशिएंट होनी चाहिए कंपनसेशन. एंड देन रिवॉर्ड वैल्यूड बिहेवियर. जो एम्प्लॉइज लाइक फॉर एग्जांपल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो एम्प्लॉइज की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज अपना डिस्क्रिशनरी बिहेवियर यूज कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दोज एम्प्लॉइज हु आर not only meeting the expectations of the organization, but they are also trying to exceed the expectation of the employer. So the organization should reward valued behavior of employees and then motivate and retain staff. Of course, this is one of the most important purpose of compensation, that it must motivate and retain staff. And how this is possible? This is only possible if you strengthen your financial and non-financial reward system and then attract talent. If your compensation is poor, if your rewards are poor, it is very difficult for the organization to attract the best talent from the market. Normally we say that, okay, people are looking for jobs and there is high unemployment rate in developing countries. But we also need to think about those people, who have, many job opportunities. And here we are talking about the most talented people. People who have wonderful, competencies, who have, wonderful skills. People who are really dynamic, who are really creative and innovative. People having a wonderful positive attitude and behavior. So organizations are looking for those kind of people. And of course those people, they also get a lot of employment opportunities. So why they will join your organization, while they will come to you, while they will apply for job in your organization. So in order to attract people towards your organization, it is really very important that you need to attract potential employees through your better compensation system. And another purpose of compensation is contribution based remuneration. Of course, pay for performance. आप जितना contribute करेंगे, आपका जितना strong input होगा, आपकी compensation उतनी बेहतर होगी, उतनी ज़्यादा होगी as compared to your colleagues. So pay for performance system. जब हम बात करते हैं best organizations की in the world, तो definitely they have adopted the pay for performance system. कि आप जितनी ज़्यादा struggle करेंगे, आप जितने smart employee हैं, उतना ही आपका एक better package है, उतना ही बेहतर आपके financial and non-financial rewards हैं. और जो आपकी performance decline होती है, आपका जो financial non-financial reward system है आपके लिए, वो भी उसी तरह उसको डिक्लाइन की तरफ जाता है. तो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस के साथ उसके रिवॉर्ड्स इंक्रीज किए जाते हैं और एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस डिक्लाइन के साथ उसके रिवॉर्ड्स को कम किया जाता है. दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन बेस्ड रिम्यूनरेशन. सो वी हैव डिस्कस्ड दीज पर्पसेस, एंड जब हम इन तमाम पर्पसेस को फुलफिल करते हैं, द रिजल्ट इज इफेक्टिव कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट
the legal compliance and institutionalized processes. Of course, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि कंपनसेशन जो है वो तमाम जो मुल्क के जो लॉज हैं, जो एम्प्लॉई राइट्स के मुतालिक हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुतालिक हैं, तो उनको वो कंप्लाइंस करे और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेसेस की तरफ अपने आप को मूव करे. Now let us talk about the relationship between pay equity and motivation. Now this slide is one of the most important slides in our today's discussion. So I need your more focus here. So in the middle you see equity, on the left you side, on the bottom inequity, on the right you see inequity. Now according to Harold Kuntz, who is one of the best philosophers of management, so according to him, when we talk about, like for example, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं कि माई इनपुट आउटपुट रेशो जो हैं और जो आप उसके साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन पर्सन्स इनपुट आउटपुट रेशो, तो जब आप देखते हैं कि आपकी इनपुट आउटपुट रेशो जो येलो कलर में आप देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट रेशो एम्प्लॉई अपनी देख रहा है और उसके साथ अपनी उसको इनपुट आउटपुट रेशो को कंपेयर कर रहा है किसी और पर्सन के साथ जो कि एक सिमिलर सिचुएशन में काम कर रहा है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में. तो जब वो कंपेयर कर रहा है या इवन सेम ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो अगर उसके कंपैरिजन में वो ये देखता है कि उसका इनपुट आउटपुट रेशो यहाँ पे उसको कंपैरिजन में लगता है कि कम है, तो देन फीलिंग्स ऑफ बीइंग अंडरपेड आ जाती हैं. एम्प्लॉइज दे फील दैट कि उनको अंडरपे किया जा रहा है. ऑन दी अदर साइड अगर आप राइट साइड पे देखें इनइक्विटी में कि माई इनपुट रेशो जो है जब आप उसको कंपेयर करते हैं तो किसी और पर्सन की इनपुट आउटपुट रेशो के साथ सिमिलर ग्रेड पे, सिमिलर पोजीशन पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपकी जो इनपुट आउटपुट रेशो है वो हायर है आपकी इनपुट आउटपुट रेशो से, तो डेफिनेटली फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरपेड आपको एक क्रिएट होती हैं. और इन द मिडल जब आप देखते हैं इक्विटी, व्हेन द एम्प्लॉइज आर फीलिंग ऑफ बीइंग पेड फेयरली, इसमें क्या है कि इनपुट आउटपुट रेशो को जब आप कंपेयर करते हैं तो इट इक्वल्स द इनपुट आउटपुट रेशो. सो दैट इज द बेस्ट स्टेज. सो द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बेस्ट प्लानर्स एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, they focus on this equity, that employees, they must feel being paid fairly. So organizations, their administrators, basically they need to take certain measures in order to ensure that there is equity in the organization. Otherwise they will not be able to achieve those objectives which they desire. Now let us talk about the various aspects of compensation planning. Linking compensation to organizational objectives. According to Harold Kuntz, we need to link the compensation to organizational objectives. Now every organization has certain objectives. So first of all you need to link the compensation to organizational objectives, कि आपका जितना मेजर ऑब्जेक्टिव है उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन होनी चाहिए उसको अचीव करने के लिए, और जितना आपका माइनर ऑब्जेक्टिव है उतनी ही आप उसको एक कम कंपनसेशन या लो कंपनसेशन की तरफ आप मूव कर सकते हैं. पे फॉर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज द क्राइटेरिया? Of course, you can never, ignore your competitors. So there should be pay for performance standards. So you can follow the pay for performance standards, particularly of your major competitors. Then talking about motivating employees through compensation. So this is another very important aspect according to Harold Kuntz, that you can motivate your employees through compensation. As we discussed that motivation comes from many factors, and one of the most important factor
organization can do is that they need to improve their compensation. And once they do it, of course, they can motivate not only the existing employees, they can motivate the talent available in the market. Now, talking about components of compensation, the first is wages. Now, wages is the remuneration given periodically for the services of labor in the process of production. Now, wages को हम इस तरह define करते हैं, then talk about salaries. So, salary is the remuneration paid monthly or yearly basis to the office staff. तो अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मंथली या ईयरली बेसिस पे जो स्टाफ को पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी सैलरी. इंसेंटिव्स की जब हम बात करते हैं, पेमेंट्स बाय रिजल्ट्स आर पेड विद सैलरी फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी, कि जो एम्प्लॉयज आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, सो रिजल्ट्स की बेसिस पे आपको पे किया जाता है. सो इट इज नॉट फिक्स्ड. सो आपके जितने बेटर रिजल्ट्स होंगे उतनी ज्यादा आपको पेमेंट की जाएगी, आपके रिजल्ट्स जितने पुअर होंगे उतना आपको कम पे किया जाएगा. सो फ्रिंज बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज, फॉर एग्जांपल मेडिकल केयर एक्सेट्रा. तो फ्रिंज बेनिफिट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं हु आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सो दे प्रोवाइड wonderful fringe benefits like medical care, educational facilities, you know, some recreational activities and things like that. Prerequisites, like for example, perquisites are the indirect benefits generally allowed to executives such as furnished homes, stock options, club memberships, etc. So perquisites में आपके ये benefits आ रहे हैं, like for example you are getting furnished homes, कि you just it is like furnished, everything is there, so सिर्फ आप you need to go there and you need to live there. Stock options, they provide their shares to their employees. They offer, if they have any memberships facilities, they provide that. So when we talk about components of compensation, all of these components are really very important. So whenever we talk about like how to improve the compensation of an organization, so we need to focus on all of these components. So let us talk about the labor market model. When we talk about the compensation, on y-axis you see that there are wages and salaries. On the x-axis you see number of qualified workers. So both when you compare the number of qualified workers on x-axis with the wages and salaries on the y-axis, you say that there is a graph and there is a cutting point there, demand of workers and supply of workers. So of course the more a number of qualified workers are there, and of course it creates that situation that according to Harold Kuntz, so this labor market model organizations they need to follow. So organizations which follow this model, they are more successful, and organizations which do not follow this model, they are in most cases not able to give the desired results. Now talking about the factors affecting compensation policy, let us talk about those internal and external factors. Now internal factors are compensation strategy of organization, कि ऑर्गेनाइजेशन की compensation strategy क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है, that is really very important. कि आप देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी like for example उनके internal factors क्या हैं, like या worth of job की हम बात करते हैं कि एक जो job है उसकी worth क्या है. जैसे हमने पहले बात की कि every organization they have certain objectives. Now जब आप एक जॉब को एक वैल्यू असाइन करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो डायरेक्टर की जो जॉब है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कितनी इनका एक की रोल है.
तो जितना ज़्यादा मेजर ऑब्जेक्टिव्स को जॉब होल्डर उसको अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, उतनी ज़्यादा उस जॉब की वर्थ होगी। तो जब आप यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ये पॉइंट आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो सकता है कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी जॉब के लिए सबसे पहले आप करते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं कि यू सर्वे, यू गो इन द मार्केट, आप पूरे सेक्टर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द टेलीकॉम सेक्टर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर है टेलीकॉम सेक्टर में, तो आप टेलीकॉम सेक्टर को देखेंगे कि हमारे मुल्क में टेलीकॉम सेक्टर में लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने मैनेजर लाइक फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन का एक मैनेजर है, आपने उसको हायर करना है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, जॉब एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में जो मैनेजर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। तो उसका एक आप सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद देन यू मूव टुवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन कि वो जो पोजीशन है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन से की टास्क होंगे, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स जॉब स्पेसिफिकेशन कि उस जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन को आपने अपॉइंट करना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब स्पेसिफिकेशन की आप बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आप कंपनसेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको कौन कौन लोग, कौन कौन से डेजिग्नेशन के लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी एक कंपनसेशन आप एक उसी ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उस जॉब की वर्थ आप वही रखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनकी एफर्ट्स हैं। एम्प्लॉइज रिलेटिव वर्थ, now this is another very important factor when we talk about the internal factors कि एम्प्लॉय की एक रिलेटिव वर्थ क्या है, कि जब आप अपने एम्प्लॉय को कंपेयर करते हैं दूसरे एम्प्लॉयज के साथ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी वर्थ क्या है, उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है, क्या वो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, गुड परफॉर्म कर रहा है, वेरी गुड परफॉर्म कर रहा है, एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है। तो आप उसको एक इन कंपैरिजन उसकी परफॉर्मेंस को आप देख रहे हैं, और जितनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगी, आप उसकी कंपनसेशन उतनी स्ट्रांग होगी, और जितनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस एवरेज की तरफ या बिलो एवरेज होगी, उतनी उसकी कंपनसेशन जो है वो कम होगी। एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि डेफिनेटली आप कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि आपकी कंपनसेशन जो है वो डिटरमिन की जाती है बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे। फॉर एग्जांपल इफ एम्प्लॉयर हैज सर्टेन बजट, सो एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्सीड दैट बजट, सो you need to make sure that whenever you try to develop that compensation system in your organization, so you need to follow all of these internal factors. Otherwise, if you develop a compensation and if you do not have the ability to pay your employees, then you will be in big trouble. Now we move on towards the external factors when we develop our compensation policy. And the first most important factor in external factor is conditions of the labor market. Now what is the situation in the market? Like for example, what is the supply of labor and what are the opportunities available? Now if there is high supply of labor in the market, of course you can pay less. But if there is shortage of labor in the market, it also means that you need to pay more. So you need to look at the condition of the labor market. So supply and labor situation, supply and demand situation. So higher supply, you need to fix a lower compensation, and if there is lower supply of labor, then of course you need to fix a higher compensation. Area wage rates. Of course, when you talk about compensation as an external factor, area wage rates are also very important कि आपकी organization कहाँ पे located है,
उसकी जोग्राफिकल क्या कंडीशन है, वो किन सर्कमस्टांसेस में है. लाइक फॉर एग्जांपल, इज इट अ प्लेस far place like far from cities, or is it a remote area, or is it a place जहाँ पे बाकी तमाम facilities available हैं. क्या city में आप operate कर रहे हैं, आप rural areas में operate कर रहे हैं, आप किसी remote area में operate कर रहे हैं. So आपकी जो एक एरिया वेज रेट्स होते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है, आपके इर्द गिर्द जो लाइक एक सराउंडिंग्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस किस्म की कंपनसेशन अपने एम्प्लॉयज को दे रही हैं. यू नीड टू लुक एट दोज फैक्टर्स एज वेल. एंड एज एक्सटर्नल फैक्टर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शन कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है. ये ना हो कि जो आप कंपनसेशन दे रहे हैं और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो उससे ज़्यादा है. तो देन हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज़. क्योंकि अगर उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा है और जो आपकी कंपनसेशन है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग से कम है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट और रिटेन योर एम्प्लॉइज़. एंड फाइनली, कलेक्टिव बार्गेनिंग थिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओवरऑल आप देखते हैं कि एक कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, all governments, they set certain standards like minimum salary requirements, minimum wage requirements, कि minimum उन्होंने wage गवर्नमेंट ने क्या उसको फिक्स की हुई है, तो उससे कम वेज आप नहीं दे सकते. आपको मिनिमम वेज से नीचे अगर आप जाते हैं तो दैट इज द वायलेशन ऑफ लॉ. उसके अलावा एम्प्लॉइज के राइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो दे नीड टू फॉलो दोज rules and regulations and laws, otherwise they will not be able to operate in the market. So when we talk about developing a good compensation policy, and the planners and administrators, they need to keep in mind all of these internal and external factors before finalizing their compensation policy. Now let's talk about the compensation criteria. What are the differentials? So pay is determined by knowledge or skills involved. Very important. कि जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी नॉलेज क्या है, उनकी स्किल्स जो हैं वो कितनी रिक्वायर्ड हैं, एंड देन वैल्यू एडिशन टू द कंपनी, और एम्प्लॉई कंपनी की वैल्यू एडिशन में उसका रोल क्या है. नाउ जब एम्प्लॉइज़ की आप बात करते हैं, स्किल्स की, नॉलेज की, उनकी वैल्यू एडिशन टू द कंपनी की, सो दैट डिटर्मिन्स द पे. And on the other side, intention of these differentials are to motivate people to strive for promotion to a higher paying level. Very important. So what people do is, when you set this criteria of knowledge, skill and value addition to the company, what happens, that employees, they want to get promotion. They want to get higher paying level. So what they do is they try to increase their knowledge, they try to build and develop and strengthen their skills, and then they try to give more value to the company in which they serve. So that creates a healthy competition within the organization. So when we talk about value and exchange value, let us discuss these compensation criteria. So use value means the value of goods or services an employee produces in a job. तो जब हम compensation criteria set कर रहे हैं तो आप देखें कि उसकी जो goods and services हैं जो employees produce कर रहा है in a job, उसकी क्या value है. Now this is really very important, क्योंकि जो goods and services employee produce कर रहा है उनकी जितनी ज़्यादा value होगी उतना ही ज़्यादा आप उसको पे करेंगे, और जितनी उनकी value कम होगी goods and services की in the market, उतना ही आप उसको कम पे करेंगे. Exchange value की जब हम बात करते हैं, whatever wage salary the employee agrees on for a job. Now this is normally done during employment interview, that employee and employer,
when they mutually agree on one salary package. So normally it depends कि जो normal criteria जो हम देखते हैं market में कि like for example it depends on the person's qualifications, experience and skills and knowledge, things like that. So it is an agreement, and this agreement is made during the interview process for a job. Now talking about the compensation criteria, now we talk about the job and person based structure की जब हम बात करते हैं, job based structures relies on the work content. Like for example task है, behavior है और responsibilities हैं कि किसी भी job में आपके कौन कौन से task हैं जो आपने perform करने हैं. Like for example we have the major tasks, we have the minor tasks. ठीक है, so किस किस्म के टास्क हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं, और बिहेवियर्स की जब हम बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज रिक्वायर्ड, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नॉर्मली हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर द अकाउंटेबिलिटी. तो जितनी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होगी उतनी ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंपनसेशन होनी चाहिए, और जितनी ही आपकी लो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतने ही आपकी कंपनसेशन लो होती है ऑर्गेनाइजेशन में. पर्सन बेस्ड स्ट्रक्चर शिफ्ट्स द फोकस टू द एम्प्लॉय, स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज द एम्प्लॉय पोजेसेस. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पर्सन बेस्ड स्ट्रक्चर लेके आते हैं तो उसमें आप एम्प्लॉय की जो ट्रेड्स हैं, एम्प्लॉय की जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उसकी बेसिस पे आप कंपनसेशन को फाइनलाइज कर रहे हैं कि उसको आप कितना रिवॉर्ड करेंगे, कितना आप उसको पे करेंगे. बट जो जॉब बेस्ड स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंस इन दोनों में हम देख रहे हैं कि जॉब बेस्ड स्ट्रक्चर्स में और पर्सन बेस्ड स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जॉब बेस्ड स्ट्रक्चर्स में उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिहेवियर और टास्क को आप फोकस करते हैं, वेयर एज इन पर्सन बेस्ड स्ट्रक्चर में उस पर्सन की डिफरेंट ट्रेड्स और उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कॉम्पिटेंसीज को आप फोकस कर रहे हैं. Now motivating employees through compensation. Now this is really very important कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली मोटिवेशन हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आई वुड से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड फॉर existence in the market and in order to be competitive in the market is motivation. Unless and until your employees are highly motivated, survival is difficult. So in order to do that, pay equity. An employee's perception that compensation received is equal to the value of the work performed. जैसे for example आप मार्केट में जाते हैं और आप जाके फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट आप परचेज करते हैं ना, शर्ट आप लेके फॉर एग्जाम्पल आपने इसके जो है 500 रुपीज आपने पे किए. शर्ट आप अपने घर लेके आ गए, आपने उसको ठीक है ऑफिस के लिए आपने ली है, या अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आपने परचेज की है, या घर में आपने पहनने के लिए ली है, या किसी पार्टी में जाने के लिए आपने शर्ट ली है. जब उस शर्ट को आप यूज करते हैं तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 500 रुपीज. सो सेम इज द केस हियर कि एम्प्लॉय की एक परसेप्शन होती है कि जो मैंने काम किया है उसके बराबर कम से कम एक मुझे रिवॉर्ड दिया जाए. और अगर एम्प्लॉय की जो उसने वर्क परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको पे ना किया जाए तो डेफिनेटली उसका मोरल डिक्लाइन की तरफ जाएगा, उसकी मोटिवेशन डिक्लाइन की तरफ जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जाएगी, और इन द लॉन्ग रन उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में एक नेगेटिव एक चेंज आने के जो है उसमें एक इम्कानात हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि पे एक्विटी जो है उसको इंश्योर करे अपनी कंपनसेशन पॉलिसी में, एंड दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ planners and administrators in an organization.
Now we talk about expectancy theory. It holds that employees exert greater work effort if they have reason to expect that it will result in a reward that is valued. Now this is really very important कि employees कहते हैं कि like for example कि employees ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे अगर उनको ये यकीन हो कि it will be valued and there will be a reward. So employees, they have certain expectations from their employers, and these are the genuine expectations. So organization, they expect a lot from employees, and of course employees, they also expect from their employers. So both try to meet or exceed each other's expectations. So expectancy theory emphasizes the same basic theme here. Now when we talk about value added compensation according to Patton, value added compensation is the compensation of employees in ways that enhance motivation and growth, while at the same time aligning their efforts with the objectives, philosophies and culture of the organization. Now this value added compensation is again very important in any compensation policy of an organization according to Patton. So it is really very important when we go for value added compensation that it enhances the motivation, and of course the result is growth, and at the same time align their efforts with the objectives. कि जो employees की जो efforts हैं और जो आपकी organization के objectives हैं उसको align किया जाता है. अब आप कैसे कर रहे हैं? There are certain, of course, एक organization में culture है, employees के एक working methods हैं, employees certain patterns के साथ काम कर रहे हैं. So what you need to do is कि employees की आप देखें कि what are the major strengths and what are the areas for improvement. तो यहाँ पे काम कर सकते हैं कि आप उनको immediately आप उनकी training and development पे focus करें in order to manage their areas for improvement. One thing, and secondly जो employees की strengths हैं उन strengths को fully utilize करने की कोशिश करनी चाहिए, और employees का एक potential होता है उसको unlock करने की कोशिश करनी चाहिए, and that is possible जब आप individual objectives और organizational objectives को आप align करेंगे. Now उसके लिए आपने क्या करना है as a administrator कि आपने जो employees की जो efforts हैं उनको एक खास direction में आपने लेके जाना है और उस direction में लेके जाना है जिस direction में आपके objectives हैं. So you need to align that, and that is the major responsibility of planners and administrators in an organization. Now what are the benefits of compensation management in development planning and administration? Let us discuss these benefits according to Harold Kuntz one by one. And the first benefit is it retains quality employees. तो जब आप quality employees की बात करते हैं तो what does it mean? It means that your best brains, your intellectual capital, your best human resources. और एक चीज आप जरूर यहाँ पे याद रखें, जो employers हैं या जो like organizations को run कर रहे हैं administrators, that quality employees, they are always in high demand. Everybody is looking for those intellectual brains. So every organization is looking for those best HR. So it means that if you want to retain your quality employees, you need to give them the quality compensation. And if you don't, you cannot retain them. Increases productivity. Of course, you need to ensure in your plans and in your strategies that you need to make these things as a part of your compensation policy, that you need to provide benefits that, for example, those employees who contribute more, so they should be paid more.
So when you pay more, of course, their loyalty increases and their motivation level increases. So pay for performance system is highly recommended for organizations. It reduces labor cost. Of course, जो आपकी labor cost है वो reduce हो जाती है. Why? Because there are less number of mistakes. There is a reduction of errors. Because highly motivated employees and loyal, employees, they are doing their best efforts, and they are trying not to repeat their mistakes. और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करते हैं, रिपीट नहीं करते, they are the best people. सो ऑफ कोर्स जब आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं कर रहे, मिनिमाइज कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को दोबारा नहीं होने दे रहे, तो डेफिनेटली दैट इज रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट. It increases employee focus on organizational objectives. So of course, when employees are happy, employees are satisfied, so they focus more on achievement of organizational objectives, because they know that if they are able to achieve the organizational objectives, they will be getting more financial and non-financial rewards. Now, in our today's discussion, we have talked about compensation. और compensation में हमने देखा कि how it has a very important role in development planning and administration. हम जब बात करते हैं effective compensation की, तो इससे क्या मुराद है कि we talk about financial rewards and non-financial rewards. So यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि like for example, जो आपकी बेस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर द एसेट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ जो आपके बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करने के लिए, उनको अपने साथ लॉयल रखने के लिए, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन पॉलिसी. तो आज के लेक्चर में जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि वी हैव टॉक्ड अबाउट कि ये सर्टन बेनिफिट्स हैं कंपनसेशन के, और जब आप इन बेनिफिट्स को सामने रखते हैं अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कूंट्स, तो what does it mean? It means that you can become a market leader. और मार्केट लीडर, ऑफ कोर्स मार्केट लीडर के तौर पे जब आप रहना चाहते हैं, यू वांट टू गेट द बिगेस्ट मार्केट शेयर, लार्जेस्ट मार्केट शेयर आप रिटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यू नीड टू फोकस मोर ऑन इंप्रूविंग योर कंपनसेशन पॉलिसी. जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप प्लान्स बना रहे हैं, तो उन प्लान्स के अंदर आप रिफ्लेक्ट करें कि लाइक फॉर एग्जांपल कि जो आपके मेजर कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं दुनिया में, what are the highest standards, what are the benchmarks, and then you need to, why not, you do something, value added compensation आप दे सकते हैं. Even पूरी दुनिया में इवन आपके कंपेटिटर्स भी अपने एम्प्लॉयज को compensation वो नहीं दे रहे जो आप दे रहे हैं. So this will create itself a wonderful competitive advantage. तो जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं, तो इन द लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कूंट्स, योर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. नाउ हाउ, फॉर एग्जांपल, व्हेन एम्प्लॉयज व्हेन दे जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, द बेस्ट एम्प्लॉयज की जब हम बात करें, दे वांट टू इम्प्रूव देयर skills, they want to learn more. So when they get those training and development opportunities. Now what do we mean by training and development? Now training is learning existing job skill requirement, and development is learning future job skill requirement. तो employees को जब आप ट्रेन कर रहे हैं, आप उनको डेवलप कर रहे हैं, तो definitely it is a wonderful environment for them and they want to stay with the same organization. तो जब हम ट्रेनिंग्स की बात करते हैं एज ए नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, देयर आर डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स. लाइक फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट recommended method is the case study method. Now
employees are given the actual situations, and they are required to analyze the situation, and they are required to suggest recommendations. So there are simulation exercises. You create the original environment artificially, things like that. So all over the world जब हम बात करते हैं benchmarks की, highest standards की, so तमाम एम्प्लॉइज़ जब उनके मुख्तलिफ इंटरव्यू किए गए, उनसे मुख्तलिफ फीडबैक लिया गया आप उसको, तो उन एम्प्लॉइज़ ने, जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज़ ने यही कहा कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली, जहाँ पे एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था, वहाँ पे उनको काम करने को ज़्यादा उनको मोटिवेशन होती थी एज़ कम्पेयर टू उन ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे उनकी स्किल्स को, उनके एक्सपीरियंस को फुली यूटिलाइज नहीं किया गया. तो एम्प्लॉइज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, सो दे लव टू वर्क फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो उनके पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करना चाहती हैं. तो उससे ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स मिलते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एम्प्लॉइज दे आर आल्सो गेटिंग द वंडरफुल बेनिफिट्स. सो जब हमने डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, compensation has a very important role here. So for example, जब हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो और उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा हों. सो हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हाईली कंपेटिटिव आपका कंपनसेशन पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, ऑन द अदर साइड हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. नाउ हाउ टू इंश्योर दैट? नाउ द थिंग इज, one thing is called output, the other thing is called outcome. Now how do we differentiate output and outcome? Okay, outputs are the end results. Like for example, organization के जो goals and objectives हैं, जो targets हैं, that is called the output. और outcome क्या है कि जो organization उस output को achieve करने के लिए employees जो अपनी efforts put in करते हैं, उसके नतीजे में उनकी जो performance enhancement होती है, उनकी skills develop होती हैं, skills polish होती हैं, knowledge increase होती है, उनकी मजीद learning होती है, उनकी competency develop होती है, that is called outcome. Now which is more important, output or outcome? According to research, outcome is more important. So what does it mean? How do we relate the outcome with the compensation policy? Very simple. In market there is survival of the fittest. So in order to be highly competitive in the market, it is really very important that all of our employees are having the best skills, the best competencies, the best learning environment. So in the long run, what happens that organization, they are able to set the benchmarks, and they grow themselves with the help of strong outcomes. So same logic can be given over here, that for planners it is highly recommended that they need to focus more on the outcome. In the short run, yes, it is you need to invest more, but this is an investment for a long-term profits, because we have the shareholders and we have the stakeholders. Now these are the shareholders की जब हम बात करते हैं, these are the people who have invested in the organization, जिन्होंने capital उसमें organization में invest किया हुआ है. So they are interested in profits. So in order to ensure the long-term profits, it is really very important that we need to work on our employees. And once we develop and strengthen our employees, it becomes easy for organization to remain highly competitive anywhere in the world. So
आई बिलीव दैट कि आज के लेक्चर से आपने काफ़ी लर्न किया होगा कि एक अच्छी कंपनसेशन पॉलिसी क्या होती है और डेवलपमेंट प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनसेशन का एक क्या रोल है, और किसी भी प्लान के अंदर जब आप एक लाइक फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर सर्टेन एलोकेशंस कर रहे हैं फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़, लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड को जितना आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपने प्लान्स के अंदर, उतना ही बेहतर इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसके स्टेक होल्डर्स के ऊपर और इसके शेयर होल्डर्स के ऊपर। सो आई बिलीव कि आज हमने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन की है compensation with respect to development planning and administration. So inshallah see you all in the next lecture. Thank you very much for your kind attention. Khuda Hafiz.